So, hello everyone, welcome to this important demo session. So, my name is Ranjit Yadav. Here, I'm going to discuss the very important chapter that is taken from the mathematics. And the name of the chapter is three-dimensional geometry, right? Three-dimensional geometry. Right. So, this is the chapter that I'm going to discuss. So here, since this is the demo session, so I'll just discuss the one very important topic that is actually equation of straight line in space. Okay, so right now here I'm assuming that you have covered the basics of the three-dimensional geometry. I'm just revising something that is a very helpful for understanding this topic. सो हम ये अज्यूम करते हैं कि सपोज अगर 3D की बात करते हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं, सो वी नीड थ्री एक्सिस, राइट? थ्री एक्सिस, राइट? थ्री एक्सिस, व्हाट आर द नेम ऑफ दैट? दैट इज एक्स, वाई एंड जेड. ये तीन एक्सिस हमारे पास होनी चाहिए, राइट? अब ये तीन एक्सिस हैं, तो विद द हेल्प ऑफ थ्री एक्सिस, दीज एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट? सो जब ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, सो विल फॉर्म अ थ्री प्लेन, राइट? थ्री प्लेन will forms three planes, that is xy plane, yz plane and zx plane, right? ये तीन प्लेन हमें मिलने वाले हैं. Since all the things are actually in the space, so अगर ये तीन प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, सो ये स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट? 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसको हम बोलेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऑक्टेट, राइट? जिसको हम बोलेंगे ऑक्टेट्स. Okay, so there will be the eight zone that is known as octets, right? So यहाँ पे ये हो जाएगा. उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं इसमें? इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हाउ टू फाइंड द you know distance between the 2 point where the 2 points are in a space. तो उसके बाद फिर अगर कोई पॉइंट स्पेस पे है, ऐसे समझ लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, राइट? सो ये हम एक पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज एन स्पेस. ठीक है. So this is the point, suppose this is the point P, right? And this point is, coordinate of this point is, I'm saying P coordinate is x, y, z. ठीक है, ये एक स्पेस में एक पॉइंट है P and that having the coordinate is x, y, z. ठीक है. तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि what is the distance of this point from any given plane, right? Like xy plane, yz plane and zx plane. Or sometimes also we have to find what is the distance of this point from any particular axis, like x-axis, y-axis and z-axis. और उसके बाद और भी बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स आते हैं that we are not going to discuss. So our intention is how to find the equation of a straight line in space, right? So in order to get into that, before we'll understand what are the very necessary points that we have to understand, right? So उस पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, right? And that is a three important, actually three golden point, I'll say three golden point. So what are that? Let's discuss. So वो है डायरेक्शन एंगल, राइट? जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे डी इज द नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन, राइट? और इसको हम प्यार से बोलते हैं डिसीज,
द नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। डी आर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर अ वेक्टर, राइट, फॉर अ वेक्टर व्हाट इज द डायरेक्शन एंगल, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो। So here I'm taking a vector which is placed in such a way that this is x, this is y, and this is z axis. So I am saying I am taking this vector, I am saying this is the point P and this is O, since it's over, so OP vector, right? और मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज द वेक्टर व्हिच इज मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, positive y axis and positive z axis respectively, right? Something like that. Just try to understand. This is alpha and this is the beta. What's the beta? Beta is the angle which is made between the positive x axis and the given vector OP here. And next, that is gamma angle, that is angle between the positive z axis and the given vector OP, right? So ये जो अल्फा बीटा गामा है, इन्हीं को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, राइट, डीएस, इन्हीं को हम बोलेंगे डायरेक्शन एंगल। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इनका कॉस ले लेता हूं, कॉस, राइट, कॉस मीन्स इट विल बी द कॉस अल्फा, इट विल बी द कॉस बीटा, इट विल बी द कॉस गामा। क्योंकि अब जो एंगल था उसका मैंने कॉस ले लिया, ओके। सिंस वी नो द kind of angle which we are representing here, it's a way of representing the direction of it, right? Since we are taking a cos of that angles, so we'll see these are the direction cosine, right? इसको हम बोलेंगे direction cosine. Since we are taking a cos, cos means cosine, so that's why we're calling as a direction cosine. We are not talking, we are not saying that this is the something else, it's because we are taking a cos of that, right? Cos, that's why we're calling as a cos alpha, cos beta, cos gamma, that is direction cosine. Suppose if I'm just multiplying with any scalar, right, any scalar, I'm taking a random scalar, that is alpha, so alpha cos, sorry, lambda, so lambda cos alpha, lambda cos beta and lambda cos gamma. अब इसको हम बोलेंगे दिस इज एक्चुअली न्यू पैरामीटर फॉर दैट पर्टिकुलर वेक्टर एंड दैट इज नोन एज डायरेक्शन रेशियो, डीआर साइल से डीआरस, राइट, दिस इज डीआरस, ठीक है। सो एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं व्हाट इज द डीएस, डीसीज एंड डीआरस। सो डीएस आर द एंगल्स that I'm taking alpha beta gamma which are actually inclination angle of alpha, inclination angle of vector OP with positive x-axis, positive y-axis and positive z-axis respectively. And then if I'm taking the cos of that particular angles, so that will be the direction cosine, that is known as DCs, right? If we are just multiplying, or because the multiple of DCs is nothing, it's a DRs or direction ratio, ठीक है। These are the important points that we have understood here, okay। कुछ results हैं that we have to understand. Results are very important. Results regarding these 3 points, right? कुछ important results हैं जो हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है, and that is actually from these 3 points, Ds, DCs and DRs. जैसे हमने देखा cos alpha, cos beta, cos gamma, इसको हम बोलेंगे DCs, ठीक, ओके। अच्छा, इसको हम एक दूसरे वे में भी रिप्रेजेंट करते हैं। cos अल्फा को हम बोलेंगे L, cos बीटा को M, cos गामा को N, तो हम इसको LMN भी बोलते हैं। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड दैट वी हैव टू अंडरस्टूड। व्हाट इज L? L मींस cos अल्फा,
What is m? M is cos beta. What is n? N is cos gamma. Right? This is very standard. Right? Okay. और इनमें एक रिलेशन होता है, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. This is a very important relation that we have to remember, right? I am saying this is a relation. अच्छा, इसी को अगर मैं cos को एक रिलेशन होता है, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, right? This is a relation that we have understood, right? That we have learned in the chapter of trigonometry. ओके, इसका यूज करें ना तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो विल गेट अनदर स्टैंडर्ड दैट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, राइट? इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो विल गेट this converted result in terms of sine, that is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2, right? This is second relation. इसको भी हमें याद रखना है. ओके, अब आगे समझते हैं और क्या. अच्छा, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. If we want to prove it, how it is this, how we can say this is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1, how? So हम प्रूव कर सकते हैं, but थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ how we'll prove it, right? देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार x y z एक्सिस ले रहा हूं और यहाँ पे एक वेक्टर फिर से मैं OP ले रहा हूं. आई एम सेइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज r वेक्टर, नथिंग. OP वेक्टर इज r वेक्टर. Okay, since this are or r vector, so I'll say the magnitude of this OP is nothing, it's the magnitude of r, right? This is the length of OP. I can say magnitude means the length of OP or any vector. Okay, if I'll say this is nothing, this is the alpha, right? This is beta and this is gamma, जो हमने अभी देखा. So अगर मैं बात करूं कि what will be this something if I'm taking a perpendicular of this on this, right? Perpendicular on this, something like that. कुछ ऐसे बनने वाला है. I'm just changing the color. कुछ इस तरह से. I'm saying this is a perpendicular. Try to assume, try to, you know, imagine that this is 90 degree, right? So this will be, this length will be, I'll say this is the A. So this OB will be nothing, it's a cos OB. Sorry, this is OA, right? So, and here 90 degree, this is a B, and here 90 degree, that is C. So OA is what? OA is R cos alpha. What is OB? I'm talking about the magnitude, right? These are all the magnitude. Or because the projection of this vector on the x-axis, y-axis, and z-axis respectively. So the mod of cos beta OC is equal to mod of R cos gamma, right? ये हो गया. तो हमें क्या चाहिए? Let's understand what is the cos square. अगर मैं इसको मैं पॉइंट मानूं, दैट इज x y z अगर मानूं, तो दिस इज नथिंग, दिस इज द x, दिस इज y एंड दिस इज z, राइट? अगर मैं p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z सपोज करूं, सो द x मींस व्हाट? दैट इज mod of OP, right? Or we can say the projection of this vector OP on the x-axis, and that is nothing, it's a mod of r cos alpha. Similarly, I can say y and z. So see, I'm just saying cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो. तो यहाँ से cos के अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? x by mod of r means r, I'm just writing, right? Whole square plus this is similarly y square by r square plus z square by r square, right? इसको ऐड कर सकते हैं, that is x square plus y square plus z square divided by r square. Since this is the magnitude
r, right? And the coordinate of this point, position vector of this point p x y z. So mod r की वैल्यू आप ध्यान से देखो ना, mod r, so it will be the, that is r, it will be the square root of x square plus y square plus z square. So if you squaring both the sides, so r square is equal to nothing, it's x square plus y square plus z square, right? Acha, so r square is equal to what? That is x square plus y square plus z square. So put it here. So इसकी वैल्यू क्या होगी? That is r square divided by r square. So cancel out that square. So I can say cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is nothing. It's equal to 1, right? I hope you understood how we are just doing this, right? Okay, कुछ और देखते हैं, आगे चलते हैं, इसी में कुछ और देखते हैं, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए हम समझ ले और क्या रिजल्ट हो सकता है हमारे पास। अच्छा, अगर हमारे पास ये वेक्टर है जो हमने देखा था, ओपी वेक्टर एक्स वाई जेड, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं ओपी वेक्टर जो है ना, ओपी वेक्टर का एल एम एन आर द डीसीज, अगर डीसीज है तो यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी, ओपी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? एल आई प्लस एम जी प्लस एन प्लस एन के कैप, राइट? एन के कैप, ये हो जाएगा, राइट? दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो याद रखना है अपने को, इसीलिए इसीलिए अगर यूनिट वेक्टर है तभी तो ये मैग्नीट्यूड ओपी क्या है, इसलिए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 है। सिंस दिस इज एक्चुअली, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट वेक्टर विल बी द यूनिट वेक्टर, राइट? तो जब भी आप किसी वेक्टर का डीसीज आपको नोन है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सो दैट वेक्टर विल बी द यूनिट वेक्टर, दैट वी हैव टू रिमेंबर, राइट? ओके, आगे चलते हैं और समझते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चीज और देखते हैं। सपोज नाउ these all are the discussion about the vector। अगर लाइन के बारे में, इसी को हम लाइन में इंट्रोड्यूस करें, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, तो अगर ये लाइन है तो लाइन में अगर बात करें तो यहाँ पे हमें ध्यान से देखना, व्हाट इज दैट दिस एरो टेलिंग, राइट? ये एरो क्या कहती है? ये एरो बताती है कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर उसके जस्ट अपोजिट है। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि इसका इस इधर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, दिस इज आर द एल एम एन है, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर माइनस एल माइनस एम माइनस एन, राइट? ठीक है, तो हमें से याद रखना है, क्या याद रखना है? बोथ आर द करेक्ट, राइट? दोनों करेक्ट है। तो हमें याद क्या रखना है? हम कंफ्यूज हमें बिल्कुल नहीं होना है। तो हमें याद रखना है कि फॉर एनी पर्टिकुलर गिवन लाइन देयर अ टू डीसीज कैन बी पॉसिबल, टू डीसीज, राइट? सो जैसे हम बात करें, हमारे पास अगर कोई एक डीसीज है, सपोज 2 2 1, और उसको डिवाइड कर दें 3 से, सो दिस इज I'll say this is DCs of this line, right? So ये भी हो सकता है, और जब इसके अपोजिट की बात करें, अपोजिट डायरेक्शन में, that is also a direction of the line, so that will be also -2/3 -2/3 and -1/3, right? ये होगा। तो ये दोनों जो डीसीज है ना, ये दोनों डीसीज एक ही लाइन के डीसीज हैं, ठीक है? एक ही लाइन के डीसीज हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही लाइन के डीसीज है, ठीक है? बस निगेटिव लगा के हम डायरेक्शन को चेंज कर पा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, मैग्नीट्यूड वही है, ठीक है? तो व्हाट वी आर गोइंग टू कंक्लूड फ्रॉम दिस डिस्कशन, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर एनी गिवन पर्टिकुलर लाइन देयर कैन बी टू पॉसिबल डीसीज आर देयर, और वी कैन से द पॉसिबल डीसीज फॉर एनी गिवन लाइन इज 2, राइट? ओके, नेक्स्ट
अगर यही बात हम करें डीआर्स के लिए, ठीक है, अगर मैं फिर से बोलूं कि एल एम एन आर द डीसीज ऑफ दिस लाइन, ओके, तो एल एम एन आर डीसीज, तो what will the DRs? DRs are nothing. It's a multiple of DCs. ठीक है? We can say this is the definition of the DRs. Means direction ratio. So what is the direction ratio? Direction ratio is nothing. It's a multiple of direction cosine. ठीक है? ओके. सो अगर मैं कोई स्केलर लेमडा लेता हूं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं लेमडा एल, लेमडा एम, लेमडा एन. So this will be the DRs. Okay. Can you tell me how many lambda value is possible for here? मैंने बोला lambda is any scalar. तो कोई भी स्केलर, कोई कुछ भी ले सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकता है, कोई 1 ले ले, 1/2 ले ले, कोई -1 ले ले, कोई 100 ले ले, 1000 ले ले, कुछ भी ले सकता है. तो लॉट ऑफ lambdas values is possible, right? Lot of lambdas values is possible. I can say the infinite number of lambda values possible here. So can we say for any particular line this infinite number of DRs are possible? Yes, for any particular line this infinite number of DRs are possible. ठीक है, इस बात को याद रखना. तो अब दोनों बातों को एक साथ कंक्लूड करते हैं. फॉर एनी गिवन पर्टिकुलर लाइन there's a 2 DCs can be possible. And the second point, for any given particular line there's an infinite number of DRs are possible. ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ पे? ओके ग्रेट, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. अगर इतना क्लियर होगा तो एक चीज लास्ट में और समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइन पे आ जाते हैं. एंड दैट इज एक्चुअली, सपोज वी हैव अ लाइन this L and this line containing 2 points on this, right? I'll say this is point A and point B, and their respective coordinates are x1, y1 and z1. And then this point B having the coordinate x2, y2, z2. Okay, so I'll write the DRs, right, of this line. अगर मैं DRs लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? जब भी हमें 2 पॉइंट नोन है on any given line, so in order to get the DRs of that, means direction ratio of that, what we'll do, we'll take actually something like that, x2 minus x1, y2 minus y1, right, z2 minus z2. What is this? This is nothing. This is DRs of this line. ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करके लिखना है. ठीक है. अच्छा, मैं डायरेक्शन वेक्टर की बात करूं, डायरेक्शन वेक्टर यहीं पे डायरेक्शन वेक्टर्स इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, लाइन एल के लिए डायरेक्शन वेक्टर की बात करूं, तो यहाँ पे जो इसको ये है ना, इसमें एक्स आई जे की कैप ऐड कर देना है, दैट्स ऑल. सो इट विल बी द x2 minus x1 आई कैप प्लस y2 minus y1 z कैप प्लस z2 minus z1 की कैप, right? So this will be the direction vector for this given line. I hope it is clear, right? So यहाँ तक क्लियर है? Yes. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. Just a moment. ठीक है, आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. अब आ गया अपना पॉइंट. अब इतना सारा बेसिक डिस्कशन करने के बाद अब अपने पॉइंट पे आ गए हैं, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस. ठीक है, तो इसका थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ, इन दिस चैप्टर एक्चुअली there's a two format in which we'll find the equation of line. The first format is vector form, and the second format is Cartesian. राइट, सो दो फॉर्मेट है, इन दोनों फॉर्मेट में हमें कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है,
ओके, जब फर्स्ट केस की बात करते हैं, केस 1, जो हमारे पास ये कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ वी हैव even we want to calculate the equation of line, so we need two important point, and that is, first, if a line passing through passing through a point and parallel to given vector, ठीक है। एक ऐसे लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जो किसी पॉइंट से पास करती है और वो किसी पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल है। तो सपोज दिस इज द कंडीशन, this is the line that we want to find the equation of this, and this is the line which is passing through the point A, which having the position vector A, right? And this is the vector which is parallel to the given line. So in this case, how to find the equation of line? इस L जो line है ना, this is the line L, इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जो हमने वेक्टर्स में पढ़ रखा है, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट? वहां हमने देखा था वेक्टर्स में कि जब भी दो वेक्टर होते हैं हमारे पास, वो दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो दैट वेक्टर्स विल बी द प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट? वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। इस बात को समझना है। तो हियर आई एम टेकिंग अ रैंडम पॉइंट दैट इज वेरिएबल पॉइंट, राइट? दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट। आई एम सेइंग दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट r which having the position vector is r, small r, right? So here we can create the two vectors, right? So I can say this is the AR vector and the second vector is B vector. Yes. And these two vectors are parallel to each other, right? These two vectors are parallel to each other. Agar parallel hai, so we can apply the condition of two parallel vector. That is, they are proportional to each other. I can say AR is proportional to vector B, right? अगर ये proportional है तो proportionality का साइन हटा के हम equality का साइन लाएंगे, so it will be AR is equal to, I'm saying a constant that is lambda b, right? Lambda b. Acha, what is the AR? AR means, AR vector means what? That is a position vector of R minus position vector of A. So what is the position vector of R? There are minus, what is the position vector of A? That is A. It's equal to lambda b. Simplified, R is equal to, I'm taking a vector from left to right, it will be the A plus lambda b, right? So this is a golden format, and this format is known as the equation of line in vector form, right? This is the equation of line vector form. ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मेट है एक, नेक्स्ट फॉर्मेट, उसके बाद हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं जस्ट मिनट, हम इसको कन्वर्ट करते हैं अभी कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट इज गिवन एंड दैट सेक्शन just this is x1, y1 and z1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये वेरिएबल है तो इसका कोऑर्डिनेट मैं मानता हूँ एक्स वाई जेड, और ये वेक्टर है वेरिएबल, सॉरी, दिस इज द वेक्टर दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन। सो ऐसे इसका जो डायरेक्शन है उसका dr डायरेक्शन रेशियो इज ए बी सी, ठीक है। तो बस इसकी जगह पुट कर देना है हमें, तो हम बात करेंगे इसकी। तो इट विल बी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, right? And then what is the position vector of that a point? That is x I x1 I cap
प्लस y1 z कैप z1 की कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ai प्लस bj कैप प्लस c कैप प्लस c की कैप, राइट, ये हो गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इस पूरे पार्ट को मैं राइट से लेफ्ट में आता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 की कैप, राइट, इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ai कैप प्लस bj कैप c k कैप, right? Since this is the point, this is the point, and this is the direction, and this is the variable point which is on the line. So compare कर लेते हैं, right? जो i का फैक्टर है या i का जो कोफिशिएंट है वो i से कंपेयर होगा, दैट मीन्स आई कैन से x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा a, राइट, y माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा b, z माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा c, राइट। सो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, सो इट विल बी x माइनस x1 divided by a is equal to lambda. This will be y minus y1 divided by b is equal to lambda. Z minus z1 divided by c is equal to lambda. ठीक है, all three are actually equal to lambda, so that means I can say from here x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c, right, is equal to lambda. So what is this? This is nothing. This is the equation of line in Cartesian form. Right? So this is the equation of line in Cartesian form. इस बात को यहाँ पे समझना है। तो हमने देखा कि how to get the equation of line in a vector form, that is r vector is equal to a vector plus lambda b vector, where r vector is a position vector that is on the line and b vector is the parallel vector with line. Okay, and the next Cartesian form is this, that is x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c is equal to lambda, right? Lambda is any parameter, any constant. And what is the ABC? ABC are the direction ratio of that particular line, right? And x1 y1 z1 is what? This is the point which is lie on the line. ठीक है, तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। एक और देख लेते हैं जल्दी से कि इक्वेशन ऑफ लाइन when that line is passing through the two given point, right? Equation of line, this is case 2. Equation of line passing through two given point. ओके, तो सिंप्लीफाई करें अगर इसको तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। दिस इज a point, that is position vector of a point is a, and this is the point b, that is given vector, the given position vector on the line, right? So I'm supposing there's another variable point, that is vector r, position vector. This is point r and position vector of this r is small r vector. Okay, सो फिर से हम ये कह सकते हैं कि दिस ए बी वेक्टर और ए आर वेक्टर हम ले सकते हैं, तो दीज आर द टू कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स पैरेलल, पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस ए आर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज ए आर? आर माइनस ए वेक्टर। व्हाट इज लेमडा? लेमडा इज बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। So r vector I can say the a vector plus lambda times of b minus a vector. What is the b minus a vector? That is nothing, it's a direction. ठीक है, this is equation 2, and this equation 2 is nothing, it's a equation of line in a vector form. Equation of line in vector form.
ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो, आई कैन से फ्रॉम हियर ऑल्सो, राइट। एक चीज समझ में आता है, व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, राइट। इसको मैं वन मानता हूँ। सो वन और टू से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, या मैं इसको ए सपोज करता हूँ, दिस इक्वेशन ए एंड दिस इज इक्वेशन बी, राइट। यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, तो यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि वेक्टर आर, दैट इज अ पोजिशन वेक्टर, वेरिएबल पोजिशन वेक्टर ऑन द लाइन, and vector A, what is vector A? Here is the point, right? Position vector or point on the line, and here is also a point. Here is also a point, right, on the line, or here is the position vector of a point on the line. तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज नथिंग, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस विल द पॉइंट प्लस लेमडा। बोथ इक्वेशन में लेमडा है, लेमडा इज वेरिएबल, और सॉरी लेमडा इज पैरामीटर, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। अब एंड व्हाट इज बी हियर इन दिस, बी इज नथिंग, it's a parallel vector with the given line, and from here, and this is also kind of a parallel vector with the given line, and that is actually known as direction. So I'll say this is direction. So this is actually kind of a format of the equation of line in the vector form. This is the format. So variable vector r, variable position vector r is equal to point plus lambda times of direction, that we have to know. So what we can conclude from here, तो जब भी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन किसी रियल प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में, तो हमें क्या पता होना चाहिए, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट? फर्स्ट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन इज पासिंग थ्रू, एंड द सेकंड इज द डायरेक्शन। ये दो पॉइंट हमें पता होना चाहिए। जब भी हमें ये दो पॉइंट पता होगा, तो वी विल इजिली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्पेस। ओके, सो यहाँ से हमें टेक अवे करना है, दिस इज द पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर। यस, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, और आई होप दिस वाज द नाइस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।